बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर C++ सीरीज़ की पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इन दिस चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड द टूल्स दैट हेल्प अ कंप्यूटर प्रोग्रामर in writing a program. The computer programming involves designing the computer programs software to solve a different kind of problem as well as to control different operations of the computer. A computer is nothing without a computer program because computer program control the computer. A computer processing steps. A computer program is designed after understanding the problem. We must be clear about the processing steps to perform the computer in order to solve a problem. It means that we must understand the logic of the program. Before writing a computer program, we must learn how to plan the logic of problem. For example, find out the average marks of student. The step and their sequence are given. Get marks all subject of the students. Calculate the total marks, calculate the average marks, display the average marks. मैं आसान लफ्ज़ों में आ जाऊँ तो किसी भी प्रॉब्लम को जब आपने सॉल्व करना है तो प्रोग्राम के बगैर नहीं कर सकते। इसमें 4-5 लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। वो लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो आपके प्रोग्रामर कहलाते हैं। वो लैंग्वेज जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो है लाजमी तौर पर सिंटैक्सिस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये था आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सबसे पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।